ओके सो लिंक लिस्ट की बात करते हैं। ओके तो लिंक लिस्ट से पहले हम स्टैक और क्यू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टैक और क्यू के जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई हमारे पास में, दैट कि जब हम स्टैक एंड क्यू की बात करते हैं तो स्टैटिक डेटा है, ओके डायनामिक डेटा पे वर्क नहीं करता है। इफ यू वांट टू ऐड एनी वेरिएबल एट रन टाइम दैट वी हैव टू यूज द लिंक लिस्ट, बट लिंक लिस्ट हैज अ डिफरेंट टाइप। ओके so when we are talking about the linked list, so linked list has basically the three types. Okay, the first one is a single linked list, then second one is a circular linked list, and third one is a double linked list. So we have the three different type of linked lists. Okay, so in today's class we discuss about the single linked list. Okay, now come to the single linked list. If I am talking about the single linked list or any linked list, we are adding the nodes, okay, and every node is divided in two sections. Okay, the first section for the data, another for the address, another for the address. The first section is for the data of that particular node. If I am talking about this data, so this data basically holds the data for this node only. Okay, maybe this node, okay, is the current node. मान लो this is the current node. So this data is for the current node. But if I am talking about the address, so this address is for the next node. Okay, so I am writing here that this is the next node. So it means it carries the address of this node. Maybe the address of this node is 1000. So here we have to mention the 1000. So while this process we are connecting from one node to the another node, and at every node in the single linked list, I am talking about the single linked list. At every node, at the last node, hold the null pointer here. That means our linked list is end, our single linked list is end at the null point. When we get in the null, it means our linked list is done. Okay, and we always start from the first node, and the first node is called the head. The first node is called the head, and we are start to head and end at the end when we are getting the null. But for that reason we have, for reaching at the end, we have to go with the traversing. But अगर traversing की बात करें हमारे पास में, और अगर मान लो by mistake we are use the head for the traversing, we are shifting the traversing for the, we are shifting the head for the traversing purpose. So it means we have forever we lost the first node. Suppose हमने head को क्या कर दिया, traverse करवा के head को यहाँ लेके आए. So it means हमारा head always क्या हो गया, first node हमारा lost हो गया. तो ये lost ना हो इसके लिए हमारे पास में क्या करना पड़ेगा, we have to design the mirror image of this head. Okay, तो हमने क्या कर दिया, head का हमने क्या कर दिया, एक mirror image बनाया temp. हेड ऑलवेज यही रहेगा हमारे पास में, जो नेक्स्ट नोड है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा आपका temp डॉट नेक्स्ट होगा, temp डॉट नेक्स्ट. ओके, तो temp डॉट नेक्स्ट के थ्रू वी आर मूविंग फ्रॉम फर्स्ट नोड टू दी अनदर नोड टू द लास्ट नोड, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर यूजिंग द सिंगल लिंक्ड लिस्ट. ओके, in the second, as I told you, we are using the two session for the single linked list. This is the first session as of the theory now. Okay, in the second section the same we are understanding this concept by using the programming. Currently we are using this, we are performing this by using the C program. Okay, तो आपको C प्रोग्रामिंग के थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने क्या प्रोसेस किया, कैसे नोड को डिलीट किया, कैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं, हाउ टू ट्रैवर्सिंग, हाउ टू परफॉर्म द ट्रैवर्सिंग. तो दीज ऑपरेशंस यू कैन अंडरस्टैंड दिस. बड़ा पॉइंट. ओके, सो we are now moving to the next section.
Thank you.